दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। अंकल जी, क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ देख तो रहा, और क्या हो रहा? मुझे नहीं पता है ना, मैं अभी आया हूँ। अभी आया तो देखो देख के पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली क्या है नहीं है। देखो कुछ समझ नहीं आ रहा है अब यहीं के डेमोलिशन किस चीज़ को लेकर सर? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है सर। को ये देख पाए कि आखिर अंदर क्या कुछ इसकी स्थिति बरकरार है, क्योंकि बुलडोजर चलने से लोगों की जीवन पर तो इसका असर पड़ा ही है, लेकिन लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ा। This is what was happening a few weeks ago in New Delhi, the capital of India. The woman among the rubble with her children is Hanifa. A kebab stall, which was her only source of income, was destroyed during a demolition drive carried out by the North Delhi Municipal Corporation, controlled by the ruling Bharatiya Janata Party. Hanifa is among the many poor Muslims of Delhi's Jahangirpuri who lost their livelihood in the demolition drive carried out by the municipal body. On the face of it, the illegal demolition drive might seem like a routine affair. In fact, it is anything but routine. From Madhya Pradesh to Delhi, and now even the state of Assam, demolitions are being used by BJP-run administrations as a weapon to intimidate Muslims. पुलिस वाले होते मैंने तो उस दिन खुला गाली दिया हूँ, तुम लोग पुलिस वाले रहते हुए भी आज मेरा सामान क्यों उठाया? शख्सों से भी यही बात हुआ। मतलब नोटिस देके किसके हाथ में नोटिस देके गए हो? हमारा पूरा मस्जिद से लेके किसके पास नोटिस आया हमें बताओ, तो हम गलती मानेंगे। हमारा गलती कहाँ पर है हमें दिखाओ। In the recent elections to the Uttar Pradesh Assembly, the bulldozer was used by BJP leaders as a metaphor to demonstrate their willingness to act against what Chief Minister Adityanath called encroachers and gangsters. The word Muslim was not used, but the message was clear. Since then, the bulldozer has been incorporated into the armory of Hindutva politics as an official force multiplier to the violence that Hindutva activists first trigger on the ground. Thus, processions were carried out for the Hindu festivals of Ram Navami and Hanuman Jayanti across various states ruled by the BJP. These processions went from pious to provocative as activists brandished swords, sticks, and in some cases even revolvers. When violence ensued, the authorities intervened in the garb of action against rioters to destroy homes, predominantly of Muslims, in pursuit of their polarizing agenda. The first experiment with this model of collective punishment happened in Madhya Pradesh in the second week of April 2022. और हम ग्रामवासी चाहते हैं कि अब आज के बाद किसी भी प्रकार के मुस्लिम हमारे ग्राम में कोई भी धंधा न करने आए। हम ग्राम की पूरी एकजुटता बनी रहे और हिंदुत्व की राष्ट्र हम चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम हमारे ग्राम में किसी भी प्रकार का धंधा न करने आए। From Khargon, the bulldozer toolkit was put to use by the BJP in New Delhi's Jahangirpuri. We visited the place 2 weeks after the demolition by the MCD. A religious festival of two communities, the Hindus and the Muslims, who live peacefully in that area. One was going to be Ramzan or Ramadan as it's called, and the other was Hanuman Jayanti, a Hindu festival and a Muslim. So it was in the context of quote unquote a clash between these two communities, which had happened on the 16th of April.
छह बजकर 20 मिनट पर हम लोग तो अपने अपने ये नमाज के लिए तैयार हो रहे हैं। जो दिखाया ना ये वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। जो फर्स्ट बार जो उस तरफ से हुआ ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये रहा मेरा दुकान। मैं दुकान में ही हूँ। मस्जिद से 30 मीटर की दूरी पे दुकान मेरा। मस्जिद के गेट के आगे 6:15 6:30 बजे कुछ मिनट ही बाकी होगा जो अफ्तारी का वक्त होता है। वहाँ पे जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, डीजे बज रहा है। तो मस्जिद से अंदर आके बोला धीरे कर लो। उधर से एक जन उठ के आ रहा गाड़ी में से भगवा झंडा लगाने के लिए मस्जिद के रैलिंग पे वहाँ। तो तभी सब निकले, नहीं तो क्या जरूरत है किसी को लड़ने के लिए। जब 2 बार निकल गए अच्छे से तो हमें क्या जरूरत पड़ रही थी हम लड़ने जाए। 16 तारीख को यही हुआ था। उन्होंने फिर कर्फ्यू लगा दिया, दुकानों बंद कर दिया। दुकान बंद करने के बाद एसीपी डीएसपी सारे जगह दुकान खोलने मना कर दिया। ना हमें घुसने देता है, ना हमें आगे ना पीछे नहीं जाने देता है। तो उसने मना कर दिया डायरेक्ट, जो तुम दुकान नहीं खोल सकते। हमने बोला नहीं खोलेंगे, लेकिन कोई सामान भी हमारा कोई हाथ नहीं लगाए। कह रहे कोई बात नहीं है, हम ड्यूटी में है, हम यहीं पर बैठेंगे। हमने छोड़ दिए। छोड़ने के बाद इन लोग क्या करा, 21 तारीख को बुलडोजर बिल्कुल लेके आके एकदम अचानक ही हमला करा। आज मेरे को एक रेडी मिला। रेडी में मैं क्या कर सकती हूँ? मेन जो चीज़ है औजार होता है, औजार नहीं है, चूल्हे नहीं है। चूल्हे आज 30,000 का है। चूल्हे बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो मैं कैसे बनाऊँ? मेरे को आज 16 तारीख से लेके ईद चला गया। मेरे को राशन दिया है 2 तारीख को। तो मेरे इतना दिन मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे कैसे पलेगा? शादी के 2-3 साल बाद मैंने रेडी लगाई थी। लोन लिया था मैंने 80,000 का बंधन बैंक से। तो क्योंकि सीख कबाब का रेडी है, उसमें भट्टी भी लगता है और लोहे की रेडी थी, स्टील का भट्टी था, सीख सरिया होता है लोहे का, कोयला आपको पता कितना महंगा आता है, पन्नी है। तो मैंने लोन लेकर बनाया था। तो उसी 20 तारीख को उसको भी तोड़ दिया। 3 हिंदू का तोड़ा है और बाकी जितना तोड़ा है सारा मुसलमान का ही तोड़ा है। कितना तोड़ा? कम से कम लगभग 150 हो जाएगा। अभी भी मुसलमान लड़कों को अभी भी घर घर से उठा के ले जा रहा है। 3 बजे उसको उठा के लेके गया। भाभी ने पूछा उसको, जो तुम क्यों लेके जा रहे हो? कह रहा पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं, तेरे आदमी को हम छोड़ देंगे। उन्होंने कुछ वो दिया था, वारंट दिया था? कुछ भी नहीं। वो अब भी तलक एफआईआर नहीं दिया, अब भी तलक। कितना दिन? ये 16 तारीख से आज कितना दिन हो गया, अभी तलक ये नहीं दिया। कपड़ा भी देने जा रहा, मिलाई नहीं करने दे रहा। भाभी भी आके रो रही थी। Religion used to be felt in the heart, but now, in the new India, it must be worn on the head or carried around blared on huge music systems. अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाथों में पत्थर उठाने वाले जिहादी, इनके प्रदूषण से दिल्ली की मुक्ति होनी बहुत जरूरी है। With the coming of 2022, all eyes were on the elections in India's largest state, Uttar Pradesh. The saffron-clad Yogi Adityanath was set to become the chief minister for a second consecutive time. जो है कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। In rhetoric, this would take Adityanath's stature second only to Prime Minister Narendra Modi, at least inside the BJP. The Chief Minister of Uttar Pradesh could not have wasted this opportunity. He made sure that the elections were polarized. In his campaigns, he constantly referred to the 80-20 arithmetic.
hinting that the 80% majority Hindu population would vote for the BJP. जिनको हमेशा विरोध करना है वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो चुनाव तो 80 बनाम 20 का है। As the months-long UP election campaign was heating up the northern Hindi-speaking belt, other instances of hate crimes also increased. There was a surge of incidents of communal violence in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand and West Bengal, where Ram Navami processions were marred by clashes. इसके बाद आपको लग रहा होगा कि ये जो हिंसक भीड़ है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इन लोगों को जेल में डाला जाएगा, अदालतें इस पर कदम उठाएंगी। ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के खारगोन में जिस तरह से जो दंगे का घटनाक्रम पेश आया, उसके बाद अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है उससे जुड़ी जो दुकानें हैं और मकान हैं उनको ढाया गया है। रियाज पिता उस्मान के घर 8-10 लोग खरगोन से आए थे, मोमेडियन। वो छुपे हुए थे, गांव वालों को पता चला, उनको देखने के लिए गए थे। तो उन्होंने वहां से उधर से पत्थरबाजी चालू कर दी। 2-4 गए थे वहां देखने के लिए कि भाई वो तो उनको भगा दो यहाँ से, गांव की सुरक्षा के लिए। उसके बाद उन्होंने पत्थर उधर से मारने चालू कर। तो ये बात कहाँ से आई थी कि 10 लोग पड़ोस वालों ने बताया था। अच्छा, FIR में जो कई नाम है, खास करके जो बलराम जो मेन अक्यूज्ड जो सब बता रहे हैं, वो अभी तक बाहर घूम रहा है। क्या उसकी अरेस्टिंग को लेकर के कोई बात? पुलिस की टीम ने अपने पूरे प्रयास कर रही है और हमारी टीम लगी। शीघ्र ही जो भी आरोपी यदि घूमते पाए जाते हैं तो आप सूचना दें, जल्दी उन्हें अरेस्ट किया जाए। उनके घर में 12 से 13 किलो नॉनवेज भी वहाँ पे बरामद हुआ। अच्छा, अब 4 लोगों के बीच में 12 किलो नॉनवेज, 12 किलो 13 किलो नॉनवेज, वो बहुत बड़ा होता है। घर में 4 लोग थे? हाँ, 4 से 6 लोग, और बैग भी थे, ट्राली बैग भी बड़े। और जो बिस्तर पेटी थी उनकी, सारे जो उनके बिस्तर थे वो बाहर रखे हुए थे, बिस्तर पेटी खाली थी। हो सकता है उनमें अंदर लोग छुपे हुए वो। और हम ग्रामवासी चाहते हैं कि अब आज के बाद किसी भी प्रकार के मुस्लिम हमारे ग्राम में कोई भी धंधा न करने आए। हम ग्राम की पूरी एकजुटता बनी रहे। मैं कहूँ कि सब हिंदू सीख चुके, सब एक हैं, और इन जिहादियों को जो है सबक सिखाया जाएगा। इन्हें देश से बाहर निकाला जाए, यहाँ इनका राशन कार्ड जो भी है वोटर लिस्ट सब खत्म कर दी जाए। लेकिन मैं कहूँ मैडम, बुलडोजर का असर इतना पड़ा है कि लोग गांव छोड़ के चले गए। आप खुश हो इस बात से? मैं तो खुश है मैडम, तो खुशी है इस बात से भाई। गांव छोड़ देंगे, आज गांव छोड़ देंगे, कल देश पे छोड़ देंगे। लेकिन वो बुलडोजर बाबा वाला चल रहा है, बुलडोजर बाबा वाला गाना चल रहा है। वो ये जी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे, दुनिया में हम भगवा लहराएंगे। ADG के मुताबिक 2 तारीख को हिंदू संगठन बाइक पर रैली निकाल रहे थे। जैसे ही ये लोग एक मस्जिद के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने उन पर पत्थरबाजी की। idea of illegality in itself has to be questioned. When the state itself, the city has not created enough housing stock, enough places for vending, they have not done that. Then when people do it themselves, they are essentially city makers, right? They are the ones who build the city. We went, housing rights activists went to every informal settlement, also called Juggi Jhopdi, Basti in Delhi, and they mapped the land area under each Basti in Delhi. And we found out that only about 0.6% of Delhi's land is under
informal settlements. So this idea that they're everywhere, they're taking over the city, this encroachment, we have to understand just from the housing perspective. That's only 0.6% of Delhi's land for about what the government says is 20% of Delhi's population. Earlier, people were given a piece of land. That piece of land continuously got smaller, but people were getting a piece of land. So say in the 2010 Commonwealth Games, when the mega sporting event was hosted here, a lot of people were pushed on the urban margin. So people were sent to Narela, Savda, Ghevra. These are colonies that are really far away, right on the urban edge. So there is no work. What is critical is that people and our policies, everybody must realize that work and housing is deeply connected. Technically, if you're talking about the master plan, the new master plan 2041 has not come, but the construction on the Central Vista has started. That is an illegal construction right now because the land use has not been changed. So the land use is still open spaces where the construction has already begun. I mean, it's a city of partition refugees. I mean, in 47, a lot of people turned up and the city had to make place, and the city did. You know, so it's essentially a city of refugees, I say. You know, economic refugees or political refugees. We cannot say no to people here. It's the nation's capital. Adesh Gupta, who is the president of the ruling party, the Bharatiya Janata Party, here in the capital, they also control the municipal corporation, that is the local body at 3 different areas of Delhi, that he had given instructions to the mayor of one particular area, which is northwest, that they should bulldoze illegal encroachments of quote-unquote rioters and criminals. Now, who is the BJP present to decide who's a rioter and a criminal is the first question. They have won that electoral mandate precisely by the policy of divide and rule on the basis of religion. So the momentum that they got from 2014 has reached a new stage, I would say. And when I say qualitatively different, I mean that they are now in a position to place their people in the most important positions in institutions which are supposed to be autonomous. And that is what changes the entire political scenario in India. They chose the bloc because it's a Muslim-dominated bloc. But once you let the bulldozer do its work, you're going to destroy all the poor. And that's exactly what's happening. So it's anti-poor, it's selective about the areas where they are targeting. And 3, it is linked to the different aspects of Hindutva ideology. These people have no consequence to the politics of that. You know, whether it's the whole of Delhi or it's that area, or because they're Bengali-speaking Muslims, because they are so vulnerable, or because they're so poor, or because most of them are women whose livelihood have been destroyed. Unless you go into what happened that day, what has the court said? A Delhi court has said it was a totally illegal procession and has asked, why were the police there? That is a question that we asked the day we went to Jahangirpuri. An attack on the minority is an attack on India. An attack on the minority is an attack on every single Indian citizen. Saadat Hasan Manto once wrote about the communal tensions of his time, and describing his pain and agony, he said, "The world is filled with good people, but it also contains some whose time is spent in sharpening their swords and daggers. They await the opportunities to distribute these blades, so that from the carnage thus spread, they might profit. These are the people who want to take India to a state of barbarism.
They want to spread insecurity through fear and carnage so that their interests remain secure. Those leaders who used religion to rouse hatred and whom I hold responsible should know that there are many in India who understand what they're doing.